Hello and welcome. You're watching Rajya Sabha television. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Shinzo Abe are holding the 12th annual India-Japan summit. The two leaders are holding talks, and this is the 4th annual summit between the two leaders. Now we cut across live to the event at Mahatma Mandir in Gandhinagar in Gujarat. Document is the exchange of notes on official development assistance between the Government of India and the Government of Japan, which includes the project for construction of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail and the construction of the International Cooperation and Convention Center in Varanasi. This will be exchanged on the Japanese side by His Excellency Mr. Kenji Hiramatsu, Ambassador of Japan to India, and on the Indian side by Shri Subhash Garg, Secretary, Department of Economic Affairs. Next are two memorandum of cooperation. The first is between the Ministry of External Affairs and the Ministry of Foreign Affairs of Japan in the field of Japanese language education in India. The second is between the Government of India and the Government of Japan for the India-Japan Act East Forum. This will be exchanged by the Ambassador of Japan to India, His Excellency Mr. Kenji Hiramatsu, and the Foreign Secretary of India, Dr. S. Jaishankar. Next is the exchange of record of discussions between the civil aviation authorities of India and Japan, to be exchanged on the Japanese side by Mr. Hiroshi Narahira, Vice Minister for International Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, and on the Indian side by Ambassador of India to Japan, Shri Sujan Chenoy. Excellencies, ladies and gentlemen, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now hand over to my colleague, the spokesperson of the Ministry of External Affairs. Good afternoon. May I request the Honorable Prime Minister of India to deliver his statement. His Excellency Prime Minister Shinzo Abe, distinguished delegates, members of the media, Konnichiwa. Good afternoon. नमस्कार. मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनन्य मित्र प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत में करने का अवसर मुझे मिला है. प्रधानमंत्री आबे शाम और मैं कई बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की साइडलाइंस पर मिले हैं, लेकिन भारत में उनका स्वागत करना मेरे लिए विशेष रूप से हर्ष का विषय होता है. कल शाम मुझे उनके साथ साबरमती आश्रम जाने का अवसर मिला. आज हम दोनों आश्रम जाने का अवसर मिला. आज हम दोनों गांधी कुटीर भी गए और बहुत विस्तार से महात्मा गांधी के जीवन को समझने का प्रयास किया. आज सुबह हम दोनों ने मिलकर जापान के सहयोग से बनाए जा रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया. ये एक बहुत बड़ा कदम है. ये सिर्फ हाई स्पीड रेल की शुरुआत नहीं है. भविष्य में हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए मैं इस नई रेलवे फिलॉसफी को नए भारत के निर्माण की लाइफलाइन, जीवन रेखा मानता हूं. भारत की प्रगति का संपर्क अब और
भी तेज गति से जुड़ गया है। फ्रेंड्स, आपसी विश्वास और भरोसा, एक दूसरे के हितों और चिंताओं की समझ और उच्च स्तरीय सतत संपर्क, यह भारत जापान संबंधों की खासियत है। हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजी और ग्लोबल पार्टनरशिप का दायरा सिर्फ द्विपक्षीय या क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। वैश्विक मुद्दों पर भी हमारा सहयोग बहुत ही घनिष्ठ है। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के समय हमने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था। इसके रेटिफिकेशन के लिए मैं जापान के जनमानस का, जापान की संसद का और खास तौर पर मेरे मित्र प्रधानमंत्री आबे-सान का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के विषय पर हमारे सहयोग के लिए इस समझौते ने एक नया अध्याय जोड़ा है। फ्रेंड्स, 2016-17 में भारत में जापान से $4.7 बिलियन का निवेश हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 80% अधिक है। अब जापान भारत में थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स बना है। यह साफ दर्शाता है कि भारत के आर्थिक विकास और सुनहरे कल की प्रति जापान में कितना विश्वास और आशावादी वातावरण है। और इस निवेश को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारत में रहने वाले जापानी लोगों की संख्या भी कई गुना बढ़ने वाली है। हमने जापान के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा तो पहले से ही दी रखी है और अब हम इंडिया पोस्ट और जापान पोस्ट के सहयोग से एक फुल बॉक्स सर्विस की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि भारत में रह रहे जापानी लोग सीधा जापानी से अपने पसंदीदा भोजन मंगा सके। साथ ही मेरा जापानी बिजनेस समुदाय से यह भी अनुरोध है कि वे भारत में अधिकाधिक जापानीज रेस्टोरेंट्स की चेन खोले। मैं अहमदाबाद का बता सकता हूं, हमारे यहाँ सैटरडे और संडे को किसी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती है। अगर जापानीज रेस्टोरेंट शुरू होगी तो कितना बड़ा मुनाफे का काम होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। आज भारत कई स्तरों पर आमूलचूल परिवर्तन की राह पर चल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या स्किल इंडिया, टैक्सेशन रिफॉर्म या मेक इन इंडिया, भारत पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जापान के बिजनेसेस के लिए यह बहुत बड़ा मौका है और मुझे प्रसन्नता है कि जापान की कई कंपनियां हमारे राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों से गहन तौर पर जुड़ी है। आज शाम को दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हमारी बातचीत और कार्यक्रम में हमें इसके प्रत्यक्ष लाभ भी देखने को मिलेंगे। जापान की ओडीए सहायता में हम सबसे बड़े पार्टनर हैं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स के लिए आज हुए समझौतों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि हमारी बातचीत और आज किए गए समझौते भारत और जापान की साझेदारी को सभी क्षेत्रों में और अधिक मजबूत करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर
प्रधानमंत्री और मेरे मित्र आवे शाम और उनके साथ आए हाई लेवल डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत करता हूं। इज्जो दे गोजाइमास। Thank you, sir. May I now request the Prime Minister of Japan to deliver his statement to the media. Namaskar. 今、私の親しい友人であり、卓越したリーダーであるモディ首相の地元、そして偉大な魂、マハートマ・ガンディの地元、グジャラート州を訪問することができ、大変嬉しく思います。昨日、モディ首相のご案内で、アバダバッティアシュラムを訪問しました。偉大なる意志と勇気を持って非暴力の哲学を貫き、最後に誰もが不可能と考えていたインド独立を成し遂げた、その足跡に触れ、マハートマ・ガンディの偉大さに改めて感銘を受けました。インド文明は古からIndia has enriched humanity through its contributions, ゼロの概念 such as と the teachings of Buddhism 人類 and the に concept 大 of きな zero. 貢献をした偉大な文明であり、 The Japanese 日 people 本人は feel tremendous インドに対 respect し for India's 深い尊敬の念 civilization. を有しています。私と Now, モディ首相の会談は this is the これで 10th meeting between 10回目 myself and Prime になり Minister ます。 Modi. 不透明さを増 Whilst す the 国際情勢 situation の on the 中、 international scene becomes 強固な ever more opaque, 日印関 the 係は地 strong 域の ties 秩序を between 支 Japan え and る India are the foundation underpinning order in our region. Working closely together hand in hand with Prime Minister Modi, I am determined to make further strides in this new age of Japan-India relations and thus play a leading role in establishing peace and prosperity in the Indo-Pacific region and throughout the world. 北朝鮮問題に対 Regarding し the recent developments in North 日印は Korea, 断固たる Japan and India will 対応を取ります。 show a firm response. 今般採択された Whole 安保理 of 決 the 議を international community 国 must 際社会 fully 全体でしっかり implement と the recently 履行 adopted し United Nations Security 北 Council 朝鮮に政 resolutions 策を and force North 変えさせな Korea け to れば change its ならない。 policy. このことを This is the モディ首 message 相と I 共 want に to convey to the world 世界に訴えたい。 together with Prime Minister Modi. かかる考えで Prime Minister モディ首相と Modi 完 and 全 I に are in full 一致 agreement いたしました。 regarding this issue. 日印は Japan and India 自由で開かれたインド will 太平洋 work 戦略 together と to bring ア about クトイースト further convergence 政策 between をさらに Japan's free and open 融合させます。 Indo-Pacific Ocean strategy 今般 and India's Act East モディ首 policy. 相との間 We で have just confirmed our mutual 日印が協力 willingness し for Japan and India to 地域 cooperate の and 連 further 携性を expand 高める the various 協力 cooperating projects that heighten the region's connectivity. アジア These projects 中東や will be rolled out in アフリカ Asia, で the Middle East, 広く and 進めていくことで also on the African 一致しました。 continent. インド北東 Japan 州への and 包括 India 的 will 支援 lead を the 推 way 進 for し enhanced prosperity in the whole 地域全体のさら region な by る promoting 繁栄 comprehensive を日印 assistance で to the northeastern 牽引していきます。 states of India. 普遍的価値 We will also strengthen our collaboration with those countries with whom we share universal values. In July, Japan, India, and the United States of America carried out Ahmedabad joint maritime exercise for the first time. Based on the strong ties of trust between Prime Minister Modi and President Trump, we will further deepen the cooperation between Japan, India, and the United States. 本日 Today, I had the pleasure of attending the groundbreaking ceremony of the High-Speed Railway Institute of India. This is an historic day to mark the first step for the High-Speed Railway of India. It is something both Prime Minister Modi and I decided 2 years ago, and it is coming to fruition on schedule. This is a testament to the determination of both Japan and India to put into practice what we decided. As a result, more than 100 Japanese engineers are working together with their Indian counterpart. An official note has been just signed to start the first provision of 100 billion yen loan for the high-speed railway project. The private sectors of both nations are also enthusiastic in order to realize Make in India. Kawasaki Heavy Industry and BHEL have agreed to collaborate in developing the rolling stock for the high-speed railway. The art of manufacturing is not limited only to railway building. This afternoon, there are some events planned in this regard.
4 Japanese India institutes for manufacturing and 1 Japanese endowed course will be starting. Personnel development and Indian manufacturing will be further enhanced. Investments between Japan and India will be further expanded mutually. We have agreed on a Japan-India investment promotion roadmap, which includes the opening of a business support center by JETRO in the state of Gujarat. Gujarat is very enthusiastic about the investment by Japan, and a memorandum of cooperation was signed to respond to this. Both the government and private sectors of Japan as a whole will promote further development in the state of Gujarat. Personal exchange. This is something I would like to promote to broaden the spectrum of Japan-India relations in a wide-ranging area. This year marks the year of Japan-India friendly exchanges in the field of culture and tourism. And in looking toward the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics, we will take more vigorous initiatives to strengthen people-to-people exchanges between Japan and India, with the emphasis on the tourism. We also hope more Indians learn the Japanese language. We have concluded a memorandum of cooperation to expand Japanese language education in India. In 100 higher education institutes, Japanese courses will be newly established with the goal of developing 1,000 Japanese language teachers. With these thoughts in mind, we have just signed a Japan-India joint statement, which will serve as a milestone to open a new era for Japan-India relations. Based on that, we will strongly promote Japan-India special strategic and global partnership to drive peace and prosperity for the Indo-Pacific region and the whole world. This time, we are very appreciated that we had a very warm, welcoming hospitality. I'd like to express my appreciation to all the people in India. Yesterday, Prime Minister greeted us, and all the Indian people waved to us along the cars. And I'd like to take this opportunity to say thank you again to all the warm hospitality and cooperation from India and also the people of India as a whole. Thank you very much. Thank you, Mr. Prime Minister. This concludes the event. All right, so these were the live visuals from Gandhinagar of signing of agreement ceremony and press statements after Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Shinzo Abe held talks on further shoring up of economic and strategic ties between their nations. And earlier in the morning, Prime Minister Modi and PM Abe also launched work on India's first bullet train at Ahmedabad. And in the evening, India-Japan business plenary will take place, and at around 9:35 p.m., Abe will depart from Ahmedabad for Tokyo. We will continue tracking the remaining part of Abe's two-day visit to India, but that's all in this broadcast. Thanks for watching.